The big announcement on Narendra Modi is most likely going to take place at 5 this evening. Hectic parleys seem to be taking place in the capital after meeting Rajnath Singh earlier in the day. Nitin Gadkari is now meeting LK Advani. Well, our political editor Navika Kumar is joining us from New Delhi. Navika, it almost seems inevitable now, but furious parley is still on to sort of at least publicly not have a divided house over the issue? That's right, but in fact what is strange is that so far the formal intimation as far as the time of the meeting hasn't gone. Yesterday, of course, after the late night meetings, we did get a sense that 5 o'clock is the time that has been set, but members of the parliamentary board have not been informed of the formal timing as yet. So a lot of parleys going on, a lot of backroom talk still going on. Nitin Gadkari meeting LK Advani and Anant Kumar meeting Sushma Swaraj. We've seen these meetings happening over the last 2 days. They continue today, and as of now, no formal intimation has gone out to the parliamentary board members. Clearly, consensus is taking the BJP a lot of time. Mr. LK Advani continues to maintain his position that he is opposed to the timing of announcement of Narendra Modi before the assembly elections, and that's the position he has maintained over the last 2 weeks, despite several meetings with the top RSS brass as well as the BJP brass. As of now, of course, we know different meetings going on in different places in New Delhi. We'll have to wait and watch. Narendra Modi still committed to a book launch at around 6 p.m. in Ahmedabad. No plans yet to come to Delhi, so it's in a bit of a flux. But as they say in the BJP, it does take a while to get the consensus going. Of course, today we did get in some of the good news coming in from alliance partners. The Shiv Sena going ahead and congratulating Narendra Modi even before the anointment has been formally announced, and that shows that at least the two alliance partners who are with the BJP as of now in the NDA are supportive of Narendra Modi. पॉजिटिव विचार है हमारा उस बारे में। कल रात को शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी और नरेंद्र भाई मोदी में लंबी बातचीत हुई है रात को, लेट नाइट, और अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव बातचीत हुई है। और कल रात को ही उद्धव जी ने नरेंद्र भाई को पूरी मन से, दिल से शुभकामनाएं दी है। तो अगर आज शाम को निर्णय होता है तो हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। इस देश की जरूरत है कांग्रेस के साथ पूरे यूपीए का सफाया हो और फिर एनडीए सत्ता में आए। इसलिए एनडीए को एक नेता चाहिए, और बीजेपी ने अगर तय किया है नरेंद्र भाई जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की, अगर मन बना लिया है, अगर निर्णय होता है तो हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। सब कुछ सेटल्ड है, सब नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तो कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यह भी सर्वमान्य है कि मोदी जी इस देश के लोकप्रिय नेता हैं, तो फॉर्मेलिटी की बात है और वो जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। क्या अब ये मान के चला जाए कि नरेंद्र मोदी बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए? अब तो ये तो बट नेचुरल है, और जहां तक उनके उम्मीदवारी की बात है, सारे लोग सहमति में हैं, सहमत हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत है।